हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निस सॉल्वर। हम आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक वीडियो कॉलिंग ऐप के बारे में। कैसे बनाते हैं एक वीडियो कॉलिंग ऐप बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो कॉलिंग ऐप। आप ये जो देख पा रहे हो फिलहाल ये एक ऐप में मतलब जो इंटरफेस मैंने बनाया है सिंपल सा है। बस मुझे यहाँ पे रूम आईडी डालनी है और मैं रूम को ज्वाइन कर सकता हूँ, जस्ट लाइक गूगल मीट वगैरह होती है उस तरीके से। आप एक कोलैबोरेटिव वीडियो प्लेटफॉर्म बना सकते हो और इसमें हमारी मदद करने वाला है बहुत ही बेहतरीन सा टूल मुझे पता लगा है। इसका नाम है जीगो क्लाउड। जीगो क्लाउड क्या करता है बेसिकली, ये हमें बहुत सारे प्री बिल्ट एसडीकेज या एपीआई प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने वॉइस ऐप या वीडियो ऐप्स या फिर चैट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे आप देखोगे इनके प्रोडक्ट्स असल में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे वीडियो कॉलिंग के लिए बना सकते हो, वॉइस कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, एआई इफेक्ट्स, क्लाउड रिकॉर्डिंग, डिजिटल ह्यूमन, सुपरबोर्ड, इन ऐप चैट्स। तो मतलब बहुत ही वास्ट वैरायटी ये लोग हमें ऑफर करते हैं। और आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज इन पर ट्रस्ट करती है, जैसे स्टार मेकर, लाइक लिव मी, इस आपने सुना होगा। तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सा वेबसाइट है और बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड करता है हमें। पर इसमें मैं इस वीडियो में मैं जो स्पेसिफिक एक टूल के बारे में बात करने वाला हूँ वो है बेसिकली यूआई किट्स। नाउ यूआई किट्स क्या है? बेसिकली एक तरह का एसडीके है जो हम लोग अपने ऐप्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं और वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ग्रुप वीडियो कॉल, वो सारे ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको फुल फ्लेजेड वीडियो कॉल ऐप बनाने की सहूलियत देता है विथ वेरी मिनिमल कोड। तो आपको बहुत ही कम कोड लिखना है, पर आपको आपका जो नीड है बेसिकली वीडियो कॉलिंग ऐप बनाना वो बन जाएगा, क्योंकि ये लोग हमें एसडीके प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग उसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत ही मिनिमल सा मैं कोड लिखूंगा और हम अपना ऐप बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। एंड कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो ये iOS के साथ, एंड्रॉयड के साथ, रिएक्ट के साथ, फ्लटर और जावास्क्रिप्ट, जितनी भी लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ऐप्स बनाने के लिए, सबके साथ ये परफेक्टली कंपैटिबल है। तो कंपैटिबिलिटी की इशू कभी नहीं आएगी और बहुत ही सुंदर सा ऐप है। आप यहाँ पे आके इस वेबसाइट पे एक टेस्ट कॉल देख सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस होता है इसमें। राइट, अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई इतना सब कुछ मिल रहा है तो ऑफकोर्स फ्री तो नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल फ्री है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक या फिर पिन्ड कमेंट में दिया गया जो लिंक है उससे जाके आप जीगो क्लाउड पर रजिस्टर कर लो, साइन अप कर लो और आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 10,000 मिनट्स। जी हाँ, 10,000 मिनट्स यू विल गेट इफ़ यू साइन अप फ्रॉम आवर गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन का पिन कमेंट सेक्शन। सो 10,000 मिनट बहुत होता है। आप उसमें अपना अपना ऐप बिल्ड भी कर लोगे, टेस्ट भी कर लोगे, हज़ारों बार रन भी कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, यू मस्ट ट्राई जीगो क्लाउड। अभी जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर पिन कमेंट में दिया गया लिंक से रजिस्टर करें जीगो क्लाउड के ऊपर और 10,000 फ्री मिनट्स को क्लेम करें। तो साइन अप करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आप यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक कर दीजिए और एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। इस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा आपसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री डाल देना, आपको एक ईमेल डाल देने हैं, पासवर्ड और फिर वेरिफिकेशन कोड, और फिर आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप पढ़ना चाहे, टर्म्स एंड सर्विसेज आप पढ़ के आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, सिंस हमारा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो हम लोग लॉगिन करेंगे। ओके, कॉग्निस हमारा अकाउंट है, सो विल जस्ट लॉग इन। और लॉगिन करते ही आपको जो दिखेगा स्क्रीन वो है कंसोल। तो ये रहा कंसोल, और कंसोल के ऊपर आपको दिख जाएगा आपका जो करंट प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, आपका टोटल बैलेंस कितना है या फिर आपको जो जो मिनट्स मिले हैं वो कितने बचे। तो मेरे सिर्फ अभी 2 मिनट ही खर्च हुए हैं। ठीक है, ये मिनट्स और इन ऐप चैट फ्री के अलावा आपको 1 महीने का सपोर्ट फ्री मिलता है। एडवांस सपोर्ट प्लान यू गेट फॉर 1 मंथ फ्री। तो अब स्टार्ट करते हैं ऐप को बनाना। तो हम लोग इसको रिएक्ट में बनाने वाले हैं, तो मैं आ जाऊँगा अपने VS कोड पे। ओके ओके, सो हम लोग बनाएंगे npx create react app YouTube वीडियो। तो हम लोग अपना ऐप YouTube वीडियो के नाम से बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा समय लेगा, डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क स्पीड, क्योंकि बहुत सारे पैकेज डाउनलोड करता है रिएक्ट। ओके, सो हमारा ऐप बन चुका है, तो हम अपने ऐप को कर लेंगे स्टार्ट। एक बार npm स्टार्ट। थोड़ा सा समय लगा ये फर्स्ट टाइम पैकेजेस बिल्ड करने में। ओके, सो हमारा ऐप चल रहा है। अब हम इसमें करेंगे अपना कोडिंग स्टार्ट। ठीक है, तो उससे पहले एक बार काम करूँगा, मैं अपने को सर्वर वापस से बंद कर लूँगा क्योंकि हमें चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग को डाउनलोड करना है npm इंस्टॉल। हमें
रिएक्ट राउटर डोम चाहिए होगा, रिएक्ट राउटर डोम, ताकि ना हम ब्राउज़र राउटर इनेबल कर सकें। ठीक है, ओके। और इस बार मैं फिर से स्टार्ट कर लूँगा। तो पहले हम लोग index.js में जाएंगे और यहाँ पे हमें चाहिए होगा रिएक्ट राउटर डोम। तो हमें बोलेंगे import समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और हमें यहाँ से करना है क्या, इंपोर्ट करना है हमें चाहिए ब्राउज़र राउटर, राइट। ओके परफेक्ट, वी हैव दिस ब्राउज़र राउटर, और हम अपना जो ये ऐप है इसको हम लोग ब्राउज़र राउटर के अंदर डाल देंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमारी जो ऐप इसमें हमारा राउटिंग इनेबल हो गया है। ओके सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, app.js के अंदर हम लोग सारी चीज़ें हटा देंगे। ओके, अभी ये एरर देगा हम लोग को, तो हम लोग सिंपल सा डिफ जो ऐप डिफ था उसको रख लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। ठीक है, हटा नहीं देंगे बेसिकली, हमें इससे हटा के कहीं और रख देंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने SRC में, और यहाँ पे बना लेंगे हम लोग एक फोल्डर जिसका नाम रखेंगे पेजेस। पेजेस के अंदर बना लूँगा एक और फोल्डर जिसका नाम रखूँगा मैं होम। ठीक है, तो इसके अंदर होम पेजेस होंगे, और इस होम के अंदर बना लूँगा एक फाइल home.js। परफेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग पहले कर लेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड कांस्टेंट होम पेज, एंड हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज। फाइन, ओके। क्योंकि हम लोग ऐप से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो अगर हम लोग अपनी एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें ब्लैंक एक वाइट स्क्रीन हमें दिखेगी, बिकॉज हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, राइट। सो हमने जो app.js से चीज़ें उड़ाई थी ना, हम लोग यहाँ पे home.js पे ला के उसको रख देंगे, तो बेसिकली कहेंगे रिटर्न। ठीक है, तो इसको एक कंटेंट में डालना पड़ेगा। ओके, और इसका क्लास नेम दे देंगे ऐप। ओके, तो अगर अब हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, ओके, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि हमने यहाँ से तो कुछ किया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो से routes, inside routes will return route। Okay, routes are, route is closing, so it's a path, default path, and then the element will be, sorry, element will be our home page which we exported, right. Perfect. So now if you go to browser, you can see our logo and this thing which was previously there in the app, we moved it to home.js. Now in home.js, so we don't need this one, we will say a beautiful tagline for our application, maybe meet, greet, and collaborate. Perfect, okay. So as you can see, meet, greet, collaborate. Now this learn react will remove, and we'll add an input field there so that we can enter the room IDs. So for that we'll remove this anchor tag, because I'll have now a little form with one field for room ID and one button for submitting. So I'll just paste it down here, right. So let's see how it looks. Perfect, so one room ID and one is join room button. So for styling, you can do your own styling and just import the home.css which I have here. Since in this video we're not talk about styling and all, it's just sole purpose of the video is to demonstrate how UIKit works from Zegocloud. So yeah, I have added this styling now. So see now it looks kind of cool, right? Fine. Now we need some things, right? Because import room ID will be there, so we need use state. So we'll import use state from React. Okay, and here we'll say constant room ID and set room ID. So in the input type text we can have the value as room ID, right. And on change, right, and on change we can have this, we have this event and then set room ID e.value. Okay, so now if I enter anything in this room ID, that room ID value will be in our variable room ID, right. So we'll have the room ID with us. Fine. Okay, that being said, we need to submit this form as well, right. So we'll have a function to handle the form submit, right. So it's going to be a very simple function. First of all, we'll get the event, right. So we'll prevent the default viewer of the form submit, and
if we have the room ID, then we'll redirect the user to the particular room of the meeting, else will alert with enter a room ID. Now we can do this window.location.href, or we can have navigations. So we can do what? We can import use navigate from React Router DOM, and here we can say constant navigate use navigate. Now we have this navigate, so we can remove this part and say navigate room and room ID. In app.js we have only defined one route, right? We have to define one more route. Okay, so in route we can have this one, right? Okay, so we can have a route room with a path variable room ID, a dynamic path variable room ID. And for now I'm returning a simple div, but we can do one thing. We can, in the pages, we can create a new folder called room. So in room we'll create room.js, right? And here simply we'll import React from React, and say const room page, and export default room page. From here we'll return so for now we'll simply return this room page. Welcome to the room, and here you can chat with the friends. Simple, right? Okay, so we can go to our app.js, and here instead of this div we can return the room page, right? We have to import it as well, right? So we'll just import the room page from room. Okay, so इसके बाद हमें क्या करना है? We have to call this handle submit on this form submission. So in this form we'll say on submit we'll call handle submit, right? Now if I go back to our application, if I say room ID 1 2 3 4 5 and I just enter, fine, we are coming to room page, right? With this room ID 1 2 3 4 5, we need params, use params. So we can say import use params from React Router DOM, and here we can say constant room ID use params. We can print this room ID to check if it's really working. Here you can chat with your friends. We come to the chat room, and we can say room ID, and here we can say this room ID. Okay, so let's go to the browser once again and see our room ID is printed here. Now if I just go back and add a different room ID 786534, I'll say join the room and say room ID 786534. Perfect. So we are now able to move to the room page from our home page. Now here the important part comes. Here we'll integrate the UIKit, right? So for that I just have to stop my server for once, and we're gonna need to install the Zegocloud provided UIKit pre-built. So we can go to the documentation and say install the SDK using npm I Zegocloud Zego UIKit pre-built. Okay, so we'll just take it, try to install it. It will take a little time depending on your bandwidth. Perfect. So now we have installed it. So you can see in the documentation itself, we need to import the Zego UIKit pre-built from Zego UIKit pre-built we just installed, right? So I'll just paste it here. Okay, so we installed our Zego UIKit pre-built. Now we need to create a new app or new project on the console. So we go to Zegocloud console. I will create a new project. What kind of project you want: video, voice and video call, video conference, live streaming, customize app. So for this tutorial we're going to use voice and video call. So I'm going to click that and go to next. Here you need to give a project name, so I'm giving same name like YouTube video. Perfect. Now it has two options. You can go with UIKits or SDKs. Anyways, we're gonna go with UIKits. So we're gonna start. It will take some time. Okay, so our YouTube underscore video project is created. Perfect. So we can create for anything. It's just saying us. So we go to dashboard. Once again, now we can see our YouTube video here. We just click on our project.
So here you can find your app ID and server secret, right? So you can copy your app ID from here and server secret from here as well. Fine. So now if you go to documentation, so we need the app ID and server secret. So I'll just copy these two things first. I'll just paste it down here. Okay. For app ID we can give any number for now, just give it and some string, just give it here. Please make sure you use your own app ID and app secret, because I want to change mine. If you are watching this video, by then I've already changed it, so you cannot use it, so don't be over smart. Okay, so if you go to documentation, you see we need to create a method which they are calling a sync method. So here we can do one thing, we can create a const my meeting, okay, which is going to be a sync method, which will be taking element as in param. Perfect. Okay, so now here we need these things inside our my meeting method or function, whatever you can call it. Okay, so next thing we need our kit token. So next thing is our kit token. So let's say const kit token. Now everything you can find on the documentation is well written. Documentation is there. You just have to follow the steps. So you can just copy this line itself here and say kit token. Okay, so first argument it takes the app ID, second argument it takes the server secret, third argument it takes the room ID, which we're gonna provide. So yeah, so the small d was there, right? That's why it was showing error, room ID. And fourth argument it takes, you see generate kit token method for test. Now we are doing it for test, right? What I mean by test, if I go to console and here you see the status is testing, right? If I just click over it, we can do testing and online. So first you test the app, then if you're confirmed that my app is working fine, then only go to online, right? So for now we are in a testing mode, so that is why we are using the generate kit token for test method. Here you see the first argument is app ID, second argument is server secret, third argument is a room ID, and fourth argument is the user ID, and then fifth argument is the user name. So user ID, as of now we don't have a unique user ID, because this user ID should come from your database, from your backend side. So for now we can say date.now, and then in place of username I'm gonna give it cogni solver. Okay, perfect. So now we have our kit token and app ID and server secret ready. Now let's see what more they tell in the documentation again. Okay, now we have to create a new instance of Zegocloud pre-built. So you can come here and we can say constant Zegocloud instance equals to Zegocloud pre-built, which we just imported, and there's a method called create which takes the kit token. We can pass our kit token here. Perfect. So we have now Zegocloud instance ready. Now we can start our meeting. So for starting the meeting, you can say this instance will have a method called join room. It will take multiple values as a parameter. So we can say zc dot join room, which will take object as a parameter, which will first take the container. Now container is something from where you want the Zegocloud to link or stitch their UI. Now you can create your own UI, but I would suggest you use their UI. It is very good and elegant. So container is basically this element we are passing here, right? So this element will be our container. So we'll pass this element here. Now there is something called scenario. What is scenario? Scenario is basically in which mode you want to join the room. Either it is one-on-one call, a video conference,
or a voice chat, something like that, right? So if you see, if I just do a dot here, you can say one on call video conference, video resolution. We can select on from multiple options like live streaming, all those things. So for this we're gonna go with video conference, right? And okay, after scenario, now you can do shared links as well. I'm not going to do that for now. So for our demo purpose, I think that's enough. From here we just have to return an empty div. Okay, so I'll just return a div. So this div gonna refer to our this my meeting method, right? This one. So in this div we're gonna do ref my meeting. Perfect. So what will happen? Zegocloud will inject their UI in this div. Okay. So before that we need to change our app ID and server secret with the actual one. So I'll just do that. So we have to run our server and start. ओके सो अब करते हैं हम टेस्टिंग अपने इस ऐप की। तो हम एक कोई रैंडम सा रूम आईडी डाल देंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड आई जस्ट जॉइन द रूम। एंड देख सकते हो आपकी जो Zego UI किट का जो इंटीग्रेटेड UI है वो खुल चुका है, राइट? तो ये हमें परमिशन मांगेगा माइक्रोफोन के, तो अलाउ कर देते हैं दिस टाइम। एंड फिर कैमरा परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देते हैं। एंड ओके सो हम दिख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इसी बहाने फेस रिवील भी हो गया मेरे चैनल पे। मैंने ऐसा कोई अपना फेस दिखाया नहीं था, बट या बहरहाल तो हमारा ऐप इंटीग्रेट हो चुका है, आप देख सकते हो। सो या हम लोग इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, राइट? एंड ये जो नाम है कॉग्नी सॉल्वर, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये कॉग्नी सॉल्वर इसीलिए आ रहा है बिकॉज अगर हम लोग कोड में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया था कॉग्नी सॉल्वर को, जो कि आपका डेटाबेस यूजर नाम आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हार्ड कोड के इस नाम कॉग्नी सॉल्वर आ रहा है। हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और फिलहाल कॉग्नी सॉल्वर के नाम से ज्वाइन करते हैं। ओके सो आई जस्ट जॉइन द रूम। तो मैंने रूम ज्वाइन कर लिया है, मैं वो कैमरा ऑन कर लेता हूँ। परफेक्ट। सो हमने रूम ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हो आपको पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट देखने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये जो आप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप स्क्रीन शेयर वगैरह कर सकते हो, राइट? ये सारे ऑप्शन आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो हमने जो यहाँ पे एक मेथड बनाया था ना, ये कहाँ गया, जॉइन रूम, इसके अंदर ये बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इनेबल डिसेबल करने के। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। बहुत इजीली प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब है इन लोगों का, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये खुल गया है इंटरफेस बढ़िया सा, और आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हो। चैट का भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे, इन ऐप चैट आप बोल सकते हो हाय, ठीक है? आप किसको हाय बोल रहे हो, दूसरा सब्सक्राइब तो कोई है नहीं। तो उनमें काम करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं और इसको एक प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं, राइट? और प्राइवेट विंडो में ओपन करने के बाद हमें किसी दूसरे नाम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ विजय पांडे के नाम से, जो कि मेरा एक्चुअल नाम है, ठीक है? तो विजय पांडे के नाम से मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड आप देख सकते हो 2 पार्टिसिपेंट्स हो गए, एक विजय पांडे और एक कॉग्नी सॉल्वर। तो अगर मैं पार्टिसिपेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 2 पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे, ठीक है? कॉग्नी सॉल्वर ने माइक म्यूट कर रखा है, विजय पांडे ने माइक इनेबल किया हुआ है, तो दैट्स फाइन। नाउ इफ आई गो टू चैट एंड आई से हाय कॉग्नी, राइट? एंड मैं अगर दूसरे टैब में जाऊँ तो मुझे यहाँ दिखेगा कि कॉग्नी सॉल्वर ने, सॉरी विजय पांडे ने हाय कॉग्नी बोला है, तो आई कैन से हाय विजय। सो इन ऐप चैट बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और बाकी चीज़ें बहुत सही से काम कर रही है, आप देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी भी ठीक है और वॉइस क्वालिटी भी ठीक ही आ रही होगी। सो दैट्स हाउ ईजी इट वॉज गाइज टू इंटीग्रेट दिस Zegocloud UI kit in your application and make a very cool video conferencing application or one-to-one application, whatever you want you can create with it, right? बहुत अच्छा लगा ये ऐप इंटीग्रेट करके और इस Zegocloud के इस UI किट को यूज़ करके। आई होप आप लोग भी यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। That being said, if you like this video, please hit that subscribe button if you haven't already, and please leave a comment what you liked about this video, what you want to change about this video, or for any video on my channel for that matter. And please do follow us on our socials. I know, we are not so active on our socials, but please do follow us. So that being said, let's meet you in the next one. Till then, keep coding and keep learning. Bye bye.